Hello students, in previous part we have studied about how we can protect our crops from the pathogens, and in this part we will discuss how we can improve our food quality or crop quality as well as SCP, single cell protein, and plant breeding for improved food quality. अब प्लांट की ब्रीडिंग कराते हैं किस लिए, ताकि हमारा जो फूड प्रोडक्ट क्वालिटी है उसकी थोड़ी फूड क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकें. बिकॉज 840 million people in the world are suffering from, you can say that they do not contain a sufficient amount of food. They do not contain sufficient amount of food, 840 million people. And out of all the population of the world, 3 billion people are suffering from hidden hunger. What do you mean by hidden hunger? Hidden hunger means they can obtain the food, but the diets which contain the nutrition substances such as protein, vitamins, minerals, they don't contain. They have take the food, but the all essential minerals, vitamins and carbohydrate fat is not available because they are not able to purchase it. They don't afford to purchase vegetable, fruits and such other things. So it is estimated that 840 million people in the world do not have adequate, means sufficient food to meet their daily requirements. 3 billion people are suffering from hidden hunger. As their diet show deficiencies in proteins, vitamins and other micronutrients. Means they are taking the food, but the essential elements or essential components which are very important for our body, which help to grow the growth of the body, they are not contained that type of food, and this type of hunger is known as hidden hunger. This is because these people cannot afford to buy vegetables, fruits, legumes, fish and meat. मतलब इस प्रकार के सामान खरीदने के एबल नहीं है, because they are very poor. This increases the risk for disease, reduce mental abilities and lifespan. Means they are taking the food, but the essential elements, essential components which help in growth of the body, they are not contained that type of food, and thus they are suffering from hidden hunger. And so because suffering from hidden hunger, the person is risk on the disease causing germs as well as reducing the lifespan as mental abilities. The next word is biofortification. What is biofortification? अब जो फूड क्रॉप्स वगैरह हम ग्रोन कराते हैं, ऐसी क्रॉप्स ग्रोन कराएं जिसमें हायर लेवल ऑफ प्रोटीन हो, हायर लेवल एंड गुड क्वालिटी ऑफ फैट भी कंटेन हो, तो इस प्रकार की प्रोसेस को बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं. ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विद हायर लेवल्स ऑफ प्रोटीन, हेल्दियर फैट is called biofortification. अब बायोफोर्टिफिकेशन करते हैं तो जो प्लांट का ब्रीडिंग करा के हमने प्रोडक्शन कराया उसमें चेक करते हैं
कितना प्रोटीन है, प्रोटीन की मात्रा कितनी है, प्रोटीन है तो प्रोटीन की मात्रा, क्वालिटी क्या है, फैट है, फैट की क्वालिटी क्या है, उसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट मिनरल्स हैं कितनी अमाउंट के अंदर कंटेंट है, ऑयल है, ऑयल की क्वालिटी क्या है। प्लांट ब्रीडिंग इज अंडरटेकन फॉर इम्प्रूव्ड nutritional quality of the plants with the following objectives. Means when we are going to plant breeding, we have to need and the sufficient undertaken such that what is the production and what is their quality. The first one is protein content and quality. ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी। सेकेंड वन इज ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, एंड थर्ड वन इज विटामिन कंटेंट, उसके अंदर विटामिन है तो कितने हैं। लास्ट वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल कंटेंट्स, इस प्रकार की क्रॉप्स के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में एंड मिनरल्स कंटेंट है या नहीं है। इसी वजह से एक इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। तो वो क्या करता है, इस प्रकार की डेवलपमेंट करने के लिए विटामिन ए इन रिच क्रॉप्स का प्रोडक्शन कराने के लिए विटामिन सी कंटेंट है, मिनरल्स कंटेंट है, इस प्रकार का प्रोत्साहन मतलब इम्प्रूव क्वालिटी के क्रॉप उगाने के लिए, ग्रो कराने के लिए किसानों को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहता है। तो इसमें है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली, has also developed many vegetable crops that are rich in vitamins and minerals. For example, vitamin A enriched crops, carrot, pumpkin, spinach, these are the vitamin A content crops. Vitamin C enriched bitter gourd, जिसको करेला बोलते हैं, बथुआ एंड टोमेटो, नेक्स्ट calcium and iron content crops, spinach and bathua. Clear? These are the properties by which we can improve our food qualities. And now the last topic is SCP, single cell protein. Single cell protein means this is not produced, the protein is which is synthesized by not only single cell unicellular organism, it can be produced from the multicellular organism, but a large scale. Conventional agricultural production of cereals, जो अनाज की फसलें हैं, cereals, pulses, vegetables, fruits may not be meet the demand of food at the rate at which human and animal population is increasing. मीन्स जिस रेट से ह्यूमन बीइंग के एनिमल की पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, इसी वे से हमारे जो कन्वेंशनल मेथड से फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, पल्सीज है, वो उस रेट से प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। देन द शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट नॉट सोल्व द प्रॉब्लम। द शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन से मीट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, as it takes 3 to 10 kilogram of grain to produce only 1 kilogram of meat. To produce
only 1 kilogram of meat by animal farming. By animal farming. 25% population of India. 25% population of India is suffering from hidden hunger. Is suffering from hidden hunger. Thus, there is need to produce protein at large scale by the SCP, single cell protein process. The term SCP stands for single cell protein. The term SCP is misleading. Means misleading. Why this word is misleading? Because the people thought that the protein which is synthesized only unicellular. That is wrong. We can obtain protein from unicellular or multicellular organism, because it not only obtained from unicellular organism, but also from multicellular. It is rich in, SCP single cell protein is rich in good quality protein and poor in fat. इस प्रकार का जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं that is good quality and it contains poor quality of fat, means that contain poor amount of fat. अब इसको प्रोडक्शन करने के लिए फंजाई की जरूरत होती है, बैक्टीरिया की जरूरत होती है और साइनोबैक्टीरिया. तो फंजाई जिससे प्रोडक्शन करवाते हैं सीपी फंजाई, यू मेक द हेडिंग फंजाई. यीस्ट एंड मशरूम प्रोड्यूस प्रोटीन. Mushrooms are eaten by many people on large scale, which provide the sufficient amount of vitamins and protein. The next one is cyanobacteria. स्पाइरुलिना जो साइनोबैक्टीरिया स्पाइरुलिना वो क्या काम करता है, वो सिंथेसाइज करता है. कैन बी ग्रोन इजिली ऑन स्पाइरुलिना जो कैन बी ग्रोन इजिली ऑन वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स which produce large quantity of starch, protein and fat. Just like next one is bacteria. बैक्टीरिया से प्रोडक्शन बहुत एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है. सपोज कीजिए 250 किलोग्राम एक काउ जिसका वेट 250 किलोग्राम है, दैट प्रोड्यूस ओनली 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे, जो केवल 200 ग्राम के आसपास ही प्रोटीन पर डे के अंदर सिंथेसाइज करती है. इसी प्रकार से अनदर टाइप के बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, यदि 250 ग्राम मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया को कल्चर्ड किया जाए तो पर डे के अंदर इनकी प्रोडक्शन जो होगी कितनी होगी, 25 टन्स सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन. Estimated that a 250 kilogram cow produce only 200 gram protein per day. 200 gram protein per day, whereas we can produce the protein at large scale by the culturing of bacteria Mithylophilus
methylotropous. Only 250 grams weight of total bacteria, 250 grams of bacteria have the ability to synthesize 25 tons of protein per day. So we can produce in the small quantity of microorganism with the higher quantity of the protein which is essential for us. Protein, if the amount of protein is becomes less in our body, then we are suffering from a disorder that is called pain. Protein energy malnutrition, and there are two types of disorders we have already studied in disease in human being: kwashiorkor and marasmus. Clear? This is the top heading. These are the simple single cell protein. One more process, टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को सिंथेसाइज यानी प्लांट को सिंथेसाइज करना है. कोई भी प्लांट सेल ले ली जाती है. ए प्लांट सेल विच इज ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम. एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर किसी प्लांट सेल को ग्रोन करा. सपोज दिस इज द आर्टिफिशियल मीडियम in which water and minerals which are required by the plants are available. Tissue culture is the process of just like as vegetative propagation. और ये artificial medium जो बनाया है इसके अंदर क्या है, water plus minerals which are essential for growing of plant. And one tissue cell or a part of any plants it put into the artificial medium. The part of plant which is known as explant, जो किसी सेल का पार्ट लेते हैं उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लांट, is grown in the artificial medium. At it start to grow and change into a new plant. और एक न्यू ग्रो करके एक न्यू प्लांट में चेंज हुआ. This process is called totipotency. Totipotency. What is totipotency? To grow a plant from the plant cell in artificial medium or in tissue culture, that is called totipotency. Clear? Just like as एक ब्रीड होता है साइटोप्लाज्मिक ब्रीड. साइटोप्लाज्मिक ब्रीड. साइटोप्लाज्मिक ब्रीड मीन्स साइटोप्लाज्म का फ्यूजन करके प्रोड्यूस करना. सपोज पोटैटो एंड टोमेटो. The somatic cell of potato and tomato are crossed with each other. The new variety is produced, pomato. Pomato is the cross hybrid या new variety of crossing of potato plus tomato. But this is not utilization for the commercialization. मतलब इस process का pomato that is produced with the crossing of potato and tomato that is not used in at large scale or commercialization in the industries. Clear? This chapter has been completed.